So we continue with the genetic basis of behavior. And in the genetic basis of behavior, we had already talked about several biological mechanisms, the DNA, the RNA, the mRNA and the tRNA, and how the DNA replicates and each cell becomes what it is because the code comes from DNA. Then we moved further to higher order mechanisms, and we talked about organisms being what they are, behaviors exhibiting in the form of physiological characteristics. And if you remember, we talked about the inheritance which is tied to some chromosomes, and we talked about inheritance which is tied to genetic material. We also talked about the hybrid vigor, and we also talked about how the hybrid vigor enlarges the gene pool. The gene pool means the available genes coming from the parents. The related parents, whether it is sweet peas, whether it is dogs, cats, or even humans, in related parents, the gene pool becomes reduced. And therefore, the recessive characteristics, they show up. And the recessive characteristics, if you remember the sickle cell anemia, if it was homozygous, and even if it was recessive, it showed up in the offspring, and offspring did not survive. So we talked about how behavior geneticists are getting more interested in understanding behavior and the genetic basis of behavior. Now, if you recall, we talked about the possibilities. It is not that behavior is all or none determined by genes. It is what is the contribution of genes and what is the contribution of environment. And can the genetic material inherited be modified by environment? And if you remember, we talked about earlier studies by Tryon in 1930s on developing breeds by selective breeding for rats which were maize bright and rats which were maize dull. Then I gave you Dobzhansky's and Seymour Benzer's research on Drosophila and how they identified characteristics through genetic selective breeding and through genetic mutations. Did you or did you not read your handouts? You should. And of course, do refer to the textbook. Pinel has a detailed description of Tryon's experiments. Let's go back to Tryon's experiments and see if we can find out how much does the environment influence behavior, learned behavior. It does. Some experiments were done in the late 40s. They said that it is not just a specific task that maze is learned, but maze learning involves a lot of other visual, spatial, kinesthetic, and of course intellectual and other capacities, even in the rats. So, if these capacities are greater, intellectual capacity greater or not, these rats will and humans will do well. So, this is a conglomerate of characteristics, not just one characteristic, but a range of characteristics which work together. Then I remember I gave you this experiment where the environment was enriched or impoverished, even for rats. And think about humans. If the environment was impoverished, even the bright rats became dull. And if the environment was enriched, the dull rats performed closer to the maize bright rats. That does bring us to another very interesting point in critical thinking, and that is
does early stimulation count? And that means that when I'm now going to talk about humans just a little bit so that you understand and think about it. Even in the human neonate, the baby, the brain is growing. So there needs to be a stimulation. The more the stimulated the brain, the more it will have the number of cells and the cortices will be thicker. So you can get bright people by stimulating in early childhood development. Okay, let's go into what we have to talk about today. And I had talked about inbreeding. Inbreeding is using the same gene pool over and over again. And I gave you this example of a study done by Adams and Neal in 1967, where they took 18 unrelated children and 18 children coming from incestuous relationships, very close relationships. And they found out, if you recall, I said there were 5 died out of these 18. They did not survive infancy and beyond. 2 were mentally retarded. Only 7 out of 18 were normal, as compared to the normal group of 18, out of which only 1 had some physical disability. So here you have 1 out of 18 in the normal, where parents were normal and were not related to each other, and in the other where parents were very close, extremely close relationship of parents, extremely close gene pool, and therefore there were the defects that you could see. This again a critical point to think is the basis of what Barash, an eminent sociobiologist, talks about. And he says, and Wilson, who is the father of sociobiology, they said sociobiology of incest is the basis in genetics, in the gene pool, in the survival of the offspring. So therefore incest is forbidden in all religions. Barash in 1977 in his book on sociobiology states, close breeding reduces the fitness. Remember Darwinian fitness, survival of the fittest of the participants, because the reduced variability of the gene pool reduces the viability, survivor viability of the offspring that is produced. Incest is taboo and it has genetic predisposition. Very interesting that the highest order of human values has a biological basis, that you are forbidden because the gene pool is contaminated and therefore defective. You need to expand the gene pool. If you remember, there was another concept of evolution which was natural selection. Natural selection pressures work on the gene pools. If we reduce the gene pools, then we reduce the genes which are available, and therefore the bad genes show up, and therefore hybrid vigor is most important. 2 different gene pools, the offspring is stronger, whether it is horses, whether it is cows, whether it is people of Asia. And I keep telling you, the people of Asia, of the subcontinent, have a very strong hybrid vigor because we have a very large gene pool that we come from. And if you remember, we talked about sickle cell anemia and Tay-Sachs disease, in which heterozygosity helps. Now what we are going to talk about is behavioral defects that emerge out of genetic defects. And genetic defects, several. One of them that we can talk about is one gene at one location. If it is defective, it will change the behavior. The first one that we talk about is phenylketonuria. Phenylketonuria is an amino acid disorder which leads to mental retardation, and it can be identified by a very strange odor of the urine. It is basically a double recessive inherited from both parents who have it, who are carriers, but they don't express it. It is expressed in their children because both characteristics are similar
and it is homozygous, and therefore the homozygous is inherited. When the homozygous is inherited, children of the parents who don't show that characteristic show up this characteristic. This particular gene defect completely upsets the biochemical pathway of dopamine, norepinephrine and epinephrine, three very important neurochemicals of the brain, and not just upsets the biochemical pathway, it also builds up toxins within the brain, and these toxins, which are phenylpyruvic acid, then works on degenerating and damaging the healthy neurons in the brain, by which consequence you will understand by which logic, therefore, the defect will be in the brain, and the defect is, always remember, in the brain it is an irreversible damage, because brain cells cannot regenerate themselves. Brain cells cannot rebuild themselves. Other cells, your skin and your hair, there are cells which continue to grow and they continue throughout your lifetime. Brain cells, once they are dead, you cannot rejuvenate them. Of course, now there have been studies where they've been trying to do some experiments to rejuvenate. So how does one watch out? First of all, hospital checks immediately after birth, then controlled diet immediately as soon as the baby is detected to have this defect, the PKU defect as we call it. That reduces the damage. The timing of treatment is of course very important, and then the brain is developing rapidly. That is when this treatment is extremely important. It does help, but genetic counseling certainly is very important when parents know the kind of risks that they are taking if they have a double recessive gene like that. Then the Tay-Sachs disease. The Tay-Sachs disease is a very interesting disease. It is a disease of the lipid metabolism. It is a disease of lipidosis, and the defect in the lipid breakdown leads to damage of the brain, and there are several very clear identifying characteristics of the Tay-Sachs disease. There are two different kinds of Tay-Sachs disease. One is the infantile form and the other is the juvenile form. The infantile form, as the name implies, occurs early in the early childhood, and the juvenile in the later part of growth and development during the late childhood. This is again a double recessive gene at a single locus. Remember, alleles on the chromosome, single, matching, homozygous, allele, chromosomes carry it. So, when both the mother and the father carry it and they are on the same location, they are carriers, but then as double recessive, it shows up in the offspring. So, first of all, double recessive, homozygous, both parents are carriers. And interestingly, this is found mainly in East European Jewish families, and especially खास एक यूरोपियन डिसेंट की Jewish families हैं जिनको हम उस ट्राइब को अश्कनाजी Jews कहते हैं, उनमें ये बहुत नजर आता है. होमोजाइगस इन्फेंटाइल सेरिब्रल लिपोडोसिस वाले बच्चे सर्वाइव नहीं करते बियॉन्ड 3 years ऑफ एज. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लाइंडनेस है, एट्रोफी ऑफ द रेटिना, मोटर वीकनेस है, और साथ साथ मेंटल डिटेरिएशन, डिजेनरेशन भी है. जाहिर है कि इतने सारे डिफेक्ट के बाद द चाइल्ड इन्फेंट विल नॉट सर्वाइव बियॉन्ड द 3 years ऑफ एज. जुवेनाइल जो है वो बिटवीन 2 years to 10 years एक्सप्रेस होता है. इसके भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑप्टिक एट्रोफी और पैरालिसिस. पैरालिसिस कैसे हुआ? मोटर डिजेनरेशन से. ब्लाइंडनेस ऑप्टिक एट्रोफी की वजह से. ऑप्टिक सिस्टम की जो रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है उसकी एट्रोफी या उसकी डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, और मेंटल डिटेरिएशन भी इसके साथ है, एंड दैट कोर्स बाय 10 years of age death occurs. So Tay-Sachs disease very
focused within a certain group and a certain family because of inbreeding and because of repeated marriages within that tribe or within that family. That is why we see this. इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है, जो तीसरा डिसऑर्डर जो कि जेनेटिक एनोमली या जेनेटिक डिफेक्ट है, वो है हंटिंगटन्स कोरिया. हंटिंगटन्स कोरिया ऑब्वियसली फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय हंटिंगटन. कोरिया, कोरिया, CHOREA, कोरिया. कोरियोग्राफी आपने फिल्में देखी ना, उनमें लिखा होता है कोरियोग्राफ्ड बाय, डांस इज कोरियोग्राफ्ड बाय. कोरियोग्राफी, मोटर, सिस्टमैटिक मोटर मूवमेंट. ये क्योंकि इस डेफिसिट में मोटर मूवमेंट स्टेरियोटिपिक है, सिस्टमैटिक किस्म की है और टिपिकल किस्म की है, इसलिए इसको हंटिंगटन्स कोरिया कहा जाता है. हंटिंगटन्स कोरिया प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि द डोमिनेंट जीन इज पास्ड ऑन टू द मेल्स ओनली एंड पास्ड ऑन फ्रॉम द मेल टू द मेल. और हंटिंगटन्स कोरिया का जो डोमिनेंट जीन का इफेक्ट है कहाँ पे होता है? अगर आप जैसे अपने कोरिया का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, मोटर मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है. तो जहां पर मोटर मूवमेंट इन्वॉल्व है, बेसल गैंग्लिया ब्रेन का एक एरिया है जो कि आपकी, जैसे मैं चलती हूँ, चलना मेरा, बैलेंस करके चलना मेरा, ये बेसल गैंग्लिया का काम है. कोऑर्डिनेट करना, अगर टांगों को एक पांव के बाद दूसरा आना है और मैंने अपने आप को बैलेंस करके रखना है, ये बेसल गैंग्लिया का काम है. इसके बाद कॉर्टेक्स जो है वो हुक्म देती है कि मैंने इस टेबल को देखते हुए इधर को मुड़ के जाना है. तो कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया दोनों मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं और इस हंटिंगटन्स कोरिया में इन दोनों पे असर होता है. इन दोनों की डिजेनरेशन होती है. कॉर्टेक्स में जो होता है डिमेंशिया, विच मीन्स, और भी इसके साथ असरात हैं, फॉरगेटिंग, भूल जाना. बेसल गैंग्लिया में इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स जो कि बड़ी स्टीरियोटिपिक होती हैं, आपने देखा हो कई लोगों को नजर आता है. इसके इन चीज़ों का इलाज हो सकता है, फॉरगेटिंग तो का इलाज नहीं कर सकते, वो प्रोग्रेसिव है. इनवॉलंटरी मूवमेंट, जर्की मूवमेंट्स का इलाज होता है, उसके लिए न्यूरोलेप्टिक्स एक दवाई है जो दी जाती है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस विच आर गिवन, और इसको ये कंट्रोल करती है जर्की मूवमेंट्स को. लेकिन इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ऑनसेट लेट इन लाइफ है, 30 to 50 ईयर्स पे ऑनसेट होता है और डेथ जो है 5 से 20 साल इसकी ड्यूरेशन है. विद इन 20 ईयर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज द पेशेंट, द रेसिपिएंट डाइज. इसमें बड़े मशहूर 2 नाम आते हैं जो बड़े बाप और बेटा, जिसकी कहीं डॉक्यूमेंटेड है कि आर्लो गथरी एंड वुडी गथरी. बाप मिड लाइफ में है, उसको पता नहीं है कि वो उसके पास ये डिफेक्ट था. आर्लो गथरी बड़ा मशहूर पेंटर, आर्टिस्ट, यू नो, वन ऑफ द फेमस क्रिएटिव पर्सन्स ऑफ द 60s. तो आर्लो गथरी एंड वुडी गथरी रिलेटेड, वन पेरेंट, द फादर पास्ड ऑन, he did not know. तो ये इसमें जो 30 to 50 ईयर्स का एज है, इसमें फादर को पता नहीं होता कि वो डिफेक्ट कैरी करता. खैर, अब हमारे पास जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक मैपिंग मौजूद है तो कर सकते हैं, लेकिन ये 50s और 60s और 70s में नहीं पता चलता था. और ये 2 बड़े मशहूर नाम हैं, आर्लो गथरी और वुडी गथरी, जिसकी ये एक एग्जाम्पल है कि हंटिंगटन्स कोरिया. एल्जाइमर्स एक और डिजीज है जो कि बहुत ही डेवास्टेटिंग है, वेरी सैड इफेक्ट्स. दैट आल्सो हैज अ जेनेटिक ट्रांसमिशन, और ये भी डोमिनेंट जीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. इसकी एक बहुत अरसा पहले, क्योंकि बहुत इस पे रिसर्च हो रही है आजकल, Alzheimer's, people are trying to understand why Alzheimer's and what happens in the brain during Alzheimer's. There was television series on the Alzheimer's, and one of the episodes showed a lady named Hannah.
and the film's title was Hannah's Heirs or Offspring. Mother Hannah was from Jewish from Russia, and she had 8 children who migrated to the US. Interestingly, 5 out of the 8 children of Hannah showed up Alzheimer's during the late 40s. Very strong evidence that there is a dominant gene which is inherited, and this dominant gene then triggers off the degenerative process which we see in Alzheimer's. So we have talked about so far several single gene defects, several anomalies which are due to only one single gene at one location. Now we are going to talk about the chromosomal abnormalities. What happens when the chromosomes they are defective and the defective chromosomes are passed on? The first one of the defects that we are going to talk about is the Down syndrome that you and I very commonly see around us. The Down syndrome is also known, if you as psychologists, you've gone through the early courses in psychology, you've talked about intelligence and you've talked about development, you know Mongolism, low to moderate IQ. Mongoloid children, these are born because of a certain chromosomal defect. Normally, recall that we had talked about 23 pairs of chromosomes that are normally inherited. 23 from the mother, 23 from the father, and these 23 then form these pairs immediately. They tie up in pairs. Now, in the Down syndrome, we have an anomaly where instead of 23 pairs, we have one additional which is coming from somewhere and attaches. So instead of 2, we have 3 chromosomes together. Now, normally सब जगह 2 हैं, pairs बने हुए हैं, हर जगह 2-2 के pairs हैं, matching pairs. एक जगह पे by accident this chromosome comes and attaches itself and becomes a 3rd chromosome. So instead of 46, we have 47 chromosomes in this particular zygote, and this is called trisomy. And बहुत specific जगह पे trisomy होती है. It is trisomy at the 21st pair of chromosomes. तो जो 21 पेयर हैं उनमें से 23 पेयर्स में से 21st पेयर पे तीसरा जाके जुड़ जाता है. और ये कहाँ से आता है? पेयर नंबर 15 का टुकड़ा. So intermingled with 15 and 21, you have the trisomy at 21. And this is during the cell formation that the 15 attaches itself to 21, which is we have called it the trisomy at 21. So 15 और 21 की एक relationship बनती. What happens? इसमें 2-3 वजूहात हैं. एक तो बहुत सारी, अगर आप if you look at the, कभी मुर्गी ज़िबा होती देखिए घर में, वो पोल्ट्री फार्म वाले नहीं, उसके अंदर से वो एक सीरीज अंडों की निकलती है. वो सारे अंडे at the time when this hen was conceived और उसके बाद ग्रो किए, तब से उसके पास stored हैं inside the ovaries. So lifetime of eggs are there. So the older, in the same way it is with the female, human females. So in the same way, the older the mother, the greater the chances of this trisomy occurring. Usually it is said that if there are women over 35 having children, they need to have a check, because possibilities of this trisomy accident taking place is greater. So more chances of having a child
with Down syndrome. उसके लिए फिर कहा जाता है कि टेस्ट करवाने चाहिए in the early development, immediately after fertilization, और कुछ अरसे के बाद एमनियोसेंटिसिस, जो एमनियोस्टिक सैक है उसका फ्लूइड निकाल के टेस्ट किया जाता है. उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर ट्राइसोमी का डिफेक्ट है. सो काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स कैन बी डन. इसके अलावा भी हैं, देयर आर एक्सीडेंट्स, रेडिएशन एंड अदर एक्सीडेंट्स by which the trisomy can occur. So imagine one small accident can cause the change in one generation. These children born have very well defined characteristics by which they can be identified, and we have talked about the mongoloid characteristics, the eyes and the other structures. Let's move on to the next, that is the Klinefelter's syndrome, Klinefelter. कई किताबों में इसको क्लाइन इस तरह भी लिखा जाता है, KLIEN, Klinefelter syndrome. This is double XY, 2 X क्रोमोसोम, याद है 2 X क्रोमोसोम मेक्स अ फीमेल, लेकिन इसके साथ एक Y क्रोमोसोम भी अटैच होता है. अगर X और Y हो तो ये मेल होता है, लेकिन अगर 2 एक्सेस हो तो ये फीमेल होता है. अब ये 3 आ गए. इंटरेस्टिंग. नाउ दिस इज अगेन अ डिफेक्ट ऑफ अ क्रोमोसोम. A chromosome has attached itself in a different form to a, now this is again a trisomy, but at the sex chromosome. Anomaly is related to the, therefore, the sex chromosome, whereas one extra X has attached itself to an otherwise normal male pattern, X and Y. Therefore, आपका क्या ख्याल है? What are the characteristics that you will see? Right, male plus female characteristics put together. So this would be a combination of male characteristics and female characteristics. However, the female characteristics, the reproductive ducts will reduce and will atrophy. Atrophy means they will die off, degenerate. So in this, otherwise it would have been a normal female. इसमें चूंकि एक मेल का वो आ गया है component, this reproductive duct will, her reproductive ducts will then degenerate. Feminized male, characteristically male है, लेकिन effeminate characteristics उसमें नजर आती हैं. In some cases, not all, in some cases it is accompanied by mental retardation as well. We have many examples. It's a fairly common disorder, but otherwise normal functioning में इनके फर्क नहीं आता. तीसरा जो syndrome है, that is known as the Turner syndrome, again a defect of a sex chromosome. In Turner syndrome, there is a missing sex chromosome. एक सिर्फ female X chromosome है, दूसरी जगह दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं, it's a missing chromosome. ना X है ना Y है. So let's call it a 0. So X0 chromosome. Now in this X0 chromosome, phenotypically and genotypically female, because X chromosome characteristics of femaleness will show up. These females, the Turner syndrome females, are short statured and their ovaries are not developed. Why? Reproductive organs are not developed because दूसरा X chromosome होता तो femaleness complete होती. So the ovaries are not completely developed. They have normal intelligence. There is one very striking characteristic of this female, the Turner syndrome female, that the these females cannot discriminate spatially. So defect of spatial discrimination, they cannot draw pictures. अगर ये कुछ boxes बना के दिए और कहा कि draw करो, copy कर लो इसको, वो उसको copy नहीं कर सकेंगे.
So spatial orientation, spatial discrimination डिफेक्टिव है, और इसीलिए एक हाइपोथेसिस ये भी है कि स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्स लिंक ट्रेट, जहां पर ये इट इज टाइड टू द एक्स क्रोमोसोम, एंड दिस इज व्हाई दिस characteristic is a biologically inherited trait. They cannot copy figures right. They have a very strong space form blindness, cannot see the spaces around you, and this say okay left side right side box ऊपर है नीचे है कोने हैं, लेफ्ट कोना कौन सा, राइट कोना कौन सा, नीचे का कोना कौन सा, डब्बा दिया है वो डब्बा नहीं उनसे बनाया जाता, शेप नहीं बनाई जाती. So they have difficulty of spatial discrimination, have difficulty of space form blindness, have difficulty of copying figures. How do we know? Because if you give them these tasks, they are unable to perform. चौथा सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में आता है वो है XYY. शुरू में आपको याद होगा, ये मैंने जब we started talking about behavior genetics, one X and one Y make a male. But what if there are two Ys? Male chromosome. Y is a male chromosome. Now when we have two male chromosomes, logically क्या नजर आएगा? Yes, the maleness will be enhanced. Maleness कैसे enhance होती है? Taller, more muscular, bigger build, sturdier, more brutal looking, more aggressive shape, form, and of course temperamental also. They have what we call the increase in maleness, an increase in aggression. A research was done on the inmates in Scottish jails, and this was done by Jarvik in 1973. And he reported that the more critical crimes, brutally critical crimes committed by males were found to have the double Y characteristic. The incident in normal of having double Y, XYY, is about 1%. In the jails, Jarvik found, the various jails, the incident was from 2 to 13% of the population in the jails, the males had double Y syndrome. So this research tried to link the brutality, the aggressiveness, the lack of control on anger, the physical bigness, all that tied to the Y chromosome. Certainly there are others who dispute these findings, but very strong evidence that the Y syndrome may have a lot to do with the brutality of the nature of the crimes. Then we have another syndrome which is called the Lesch-Nyhan syndrome. L-E-S-C-H, Nyhan is N-Y-H-E-N. Lesch-Nyhan syndrome is a recessive gene which is carried on the X chromosome, and it is only expressed in males because it follows the distribution of X from the mother and expresses itself when there are two recessives which were expressed. What does the Lesch-Nyhan syndrome show up? Lesch-Nyhan has cerebral palsy. ये एक बहुत serious defect है. Cerebral palsy, involuntary movement of the limbs, lower limbs and the hands, or hands, feet, facial muscles, contortions, distortions, jerky movement चलती रहती है. Control नहीं है of the person who has this syndrome. इसकी सबसे distinctive characteristic है, the Lesch-Nyhan syndrome, is the self-mutilation. And I have seen pictures of the patient, the child of Lesch-Nyhan syndrome, where they have eaten away their lips. खुद ही खा जाते हैं काट काट के.
या उंगलियां खा जाते हैं. So they mutilate their hands, they chew them and they mutilate their lips. So जो चीज करीब है, and normally you do that and you feel the pain. So perhaps there is also a defect in the understanding of the pain mechanism. So इसके biological, remember we said that the gene does not affect behavior directly, but affects by changing the chemical, biochemical, enzymatic and other processes within the system, the organism, the body and its systems. इसमें दो चीजें तो बड़ी क्लियर हैं. एक है एंजाइम डेफिशिएंसी. एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन होती है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा जो सेल्फ म्यूटिलेशन है, इट हैज बीन फाउंड to be related to the overproduction of, and it has been found in the blood plasma, dopamine beta hydroxylase. Now ask me, what is dopamine beta hydroxylase? Dopamine beta hydroxylase is an enzyme part of the chain of synthesis of dopamine, norepinephrine and epinephrine. So तीन बड़े important न्यूरोकेमिकल्स की चेन को अफेक्ट करता है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज. एंड एंजाइमेटिक एक्शन है हाइड्रोक्सिलेज, कैटालिटिक एक्शन. प्लाज्मा में ये वी फाउंड दैट एविडेंस इन प्लाज्मा, द ब्लड प्लाज्मा, एंड इट हैज बीन रिलेटेड टू द सेल्फ म्यूटिलेटिंग. रिमेंबर म्यूटिलेशन का जो मैंने बताया, chewing their own lips and chewing their fingers, eating them up, destroying them. They don't feel the pain. There was this news in item जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बच्चा है किसी जगह से, जो उन्होंने इसको स्टडी कर रहे हैं यूएस में या यहाँ से अफगानिस्तान से, ये नॉर्दर्न एरिया से बच्चा लेके गए जो अपने आप को खुद काटता है. और ये आई सस्पेक्ट देयर वाज परहैप्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच was not, because वो कह रहा था कि मेरे भाई, मेरे cousins वो सारे इस तरह करते. तो it was, they were trying to identify that disorder. So far we have studied single gene defects on a single location, and I've given you some examples. Then we talked about chromosomal defects, where if it was recessive or if it was dominant. Double recessive, dominant if it was heterozygous, double recessive it was homozygous, it will show up whether it is a single gene defect or whether it is chromosomal defect. Now we go on to behaviors of a larger or a more complex nature, behaviors which involve a larger number of traits. And these traits, when put together, summed together, become this particular characteristic. Studies have been done on human behaviors using paradigms of what we call the twin studies paradigm. The twin studies paradigm uses the monozygotic twins. The monozygotic twins coming from mono, same, single, one egg, zygote. So monozygotic twins will be 100% like each other. They carry 100% the same gene material. Then we have dizygotic twins. The only similarity that the dizygotic twins have with each other is the time of birth, and that they have been in the amniotic sac or in the womb together. वो environment constant थी, similar थी, time of birth is similar, but otherwise dizygotic twins are similar like siblings. Sibling means और बहन भाई. तो 50% of the genes are similar. दूसरी चीज जो इसमें हम मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन स्टडीज हैं, इसके अलावा
इसको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या पोस्ट हॉक स्टडीज करते हैं रिसर्चर्स यूजिंग द एनवायरमेंट। रियल पेरेंट्स के साथ पले कि फॉस्टर पेरेंट्स के साथ पले। फॉस्टर पेरेंट्स के बर्थ पे ही, पैदा होते ही माँ बाप से अलहदा हो गए या माँ से। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर ड्रग एडिक्ट है मदर तो उससे बच्चे लेके वेस्ट में वो फिर सेफ पेरेंट्स, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी होती है ना कि पेरेंटिंग जो है वो उस पर नज़र रखते हैं वेस्ट के लोग, जो स्टेट्स हैं और गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो उनकी जिम्मेदारी। तो अगर पेरेंट ठीक नहीं है, फादर एल्कोहलिक है, मदर ड्रग एडिक्ट है, या वो पाल नहीं सकी, या वो हॉस्टाइल हैं, एग्रेसिव हैं, तो उनसे बच्चे लेके नॉर्मल फैमिलीज को दे देते हैं कि तुम पालो। तो ये हुआ फॉस्टर पेरेंट्स। रियल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स पाले या फॉस्टर पेरेंट्स पाले। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की ऐसी भी स्टडीज हैं जहां एक ट्विन पला अपने रियल पेरेंट्स के पास और एक ट्विन पला फॉस्टर पेरेंट्स के पास। तो ये स्टडीज फिर देखने में then you can identify and separate the effects of environment and separate the effects of the genetic material inherited. In adoption studies that we are talking about, the foster parents adopt a child. Behavior, if it is similar to those of the biological parents, then it can be attributed to the genes, because these adopted children do not have a contact with the biological parents. फिर ये behavior कैसे नजर आया? फिर नेसेसरली ये जीन्स की वजह से हुआ, क्योंकि पेरेंट्स अब तो फॉस्टर हैं, अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, उनसे उनकी तरह के भी नहीं हैं ये। हाउएवर, अगर इनका बिहेवियर अडॉप्टेड बच्चों का, जो ट्विन्स हैं, जो मोनोजाइगोटिक या डाइजोटिक, इफ दे आर देयर बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अडॉप्टेड पेरेंट्स, फिर हम कह सकते हैं कि देखें environment is more important and it has played a role in the behavior that we have seen. इसमें 3-4 behaviors में आपको just for example to illustrate the characteristic दूंगी, और इस पे पहली बात याद रखने की है कि जब हम behavior की बात करते हैं ना, behavior is far more complex. It is not just a chemical. It is a conglomerate of different traits put together. So there is more than one characteristic making up a trait. पहली बात, पहला उसूल, पहला principle. So there will be then necessarily, पहली बात ये कि polygenic है ये, many traits put together, many characteristics put together will make up that trait. दूसरी चीज, trait जो है वो continuous है, it's in gradations. तो मोर और लेस, थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और इसके लिए एग्जांपल आप ले लीजिए, इंटेलिजेंस का एक ग्रेडेशन है, शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी की ग्रेडेशन है, इसी तरह से एडिक्शन मोर और लेस, उसकी भी ग्रेडेशन है, अल्कोहलिज्म ग्रेडेशन है, बिहेवियर की ग्रेडेशन होती हैं। सो देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ मोर और लेस। ये बात भी समझने की हमने जब ध्यान में रख ली तो हम कंपेयर कर सकते हैं ऑफ द रिलेटेड और अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑन टेस्ट्स, ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंसेस दैट शो अप इफ देयर आर सिमिलैरिटीज और देयर आर डिफरेंसेस। तो बिहेवियर जेनेटिसिस का रोल क्या है? बिहेवियर जेनेटिसिस क्या करेगा? वो ये आइडेंटिफाई करने का, सेपरेट करने की कोशिश करेगा कि जीन्स को कितनी कंट्रीब्यूशन है इस बिहेवियर में और एनवायरनमेंट की कितनी कंट्रीब्यूशन है इस बिहेवियर में। सो वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स एंड वेरिएशन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स इज व्हाट द बिहेवियर जेनेटिसिस्ट ट्राइंग टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई। पहला जो बिहेवियर हम लेते हैं वो है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया है क्या? बड़ा सुनते हैं, साइकोलॉजी किताबों में आपने देखा होगा। शिज़ोफ्रेनिया बहुत सारे सिंड्रोम्स का एक कॉन्ग्लोमरेट है, लेकिन इसमें अगर आप DSM-4 देखें
या डायग्नोस्टिक और ICD-10 वगैरह देखें तो उसमें इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बेसिकली हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूशंस ऑफ ग्रैंडियर, पैरानोया है, फिर रेपिटेटिव एक्ट्स हैं, बार बार करना एक चीज़ को, फिर इसके साथ साथ लैक ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, रियलिटी से कांटेक्ट लोगों का ख़त्म हो जाता है। ये अपनी दुनिया में है और अपनी दुनिया में ही दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं, और इसके लिए पहले तो ट्रीटमेंट नहीं होता था, उनको चेनों से बांध के रखा जाता था, आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब ट्रीटमेंट है। तो दिस इज अ सिंड्रोम दैट वी कैन स्टडी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट ऑफ वेदर इट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड और वेदर इट इज एनवायरमेंटली, कि जी वो उस पर इतने तकलीफें पड़ी कि वो शिज़ोफ्रेनिक हो गया, क्या ऐसा है? या क्योंकि वालिदा, वालिद, कोई रिश्तेदार, बहन भाइयों में से ये कैरेक्टरिस्टिक थी, तो इसमें भी नज़र आती है पेशेंट में। तो क्या फैमिली हिस्ट्री है? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक है, या हालात की वजह से हुआ तो वो जी फिर एनवायरनमेंट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली बात, हालात होंगे ज़रूर, लेकिन इट इज़ जेनेटिकली इनहेरिटेड। In the general population, the expectancy is 1% of this particular syndrome. However, if you look at the related family members who have schizophrenia and the members who are now diagnosed as schizophrenia, past family history क्या कहती है? अगर siblings और dizygotic twins, याद है dizygotic twins हमने कहा था like siblings हैं, siblings and dizygotic twins, अगर एक को है तो दूसरे को होने के चांसेस 10 से 15%, 10 to 15%, या 1% से jumping up to 10 to 15%, that's quite a number। अगर एक पेरेंट को है शिज़ोफ्रेनिया, फैमिली हिस्ट्री है शिज़ोफ्रेनिया की, तो ऑफस्प्रिंग को या बच्चों में से किसी को 10 to 15% चांसेस, अगेन द सेम एज दैट ऑफ द सिबलिंग एंड द डायजाइगोटिक। अगर दोनों पेरेंट्स को है और दोनों पेरेंट्स को हो तो फिर कितने चांसेस है? अमेजिंग। दिस इज द फाइंडिंग विच गिव्स अस दिस माइंड ब्लोइंग दैट बोथ पेरेंट्स इफ दे हैव इट 40% से लेके 65% तक, so 40 to 65%, from 1% to 10 to 15% if the brothers or sisters are like schizophrenic, or if one parent is schizophrenic and if both parents are schizophrenic, the chances go up 40 to 65% that this particular individual will exhibit and will have and will inherit the schizophrenic the trait. क्या है ये imbalance? This imbalance is chemical, this imbalance is neurochemical, this imbalance is neural, this imbalance is biological. ये सारी imbalances जो हैं ये किसकी वजह से होती? जो डिफरेंस है जेनेटिक कोड की वजह से, और ये जेनेटिक कोड पेरेंट्स से हिस्ट्री में, इन द जेनेटिक हिस्ट्री दे गेट इट फ्रॉम द पेरेंट्स। सो वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इट इज जेनेटिकली लिंक्ड। वी नो इट, it is imbalances in dopamine, and we know it imbalances in the neurotransmitter dopamine, and we know it that, how do we know? Evidence hai homovalenic acid HVA metabolites, which are metabolites of dopamine, are found in the urine of schizophrenics. So इसमें दो possibilities है. How is schizophrenia inherited? Either by a double recessive gene, if both parents have it, 40 to 65, both parents have it, or a dominant gene from one parent. So this can be the basis of schizophrenic inheritance. Evidence from
genetic predisposition, 17 studies put together have shown from, ये बड़ी कोई 30, 40, 50 साल की स्टडीज को उन्होंने इकट्ठा किया 1928 से 1972 तक, और उन्होंने सारी दुनिया में जहाँ जहाँ ये स्टडीज हुई थी ऑफ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, इनको रिलेशनशिप्स को स्टडी किया, एंड दे फाउंड आउट ऑब्वियसली दैट द हाईएस्ट exhibition or expression of schizophrenia is in both parents if they both are monozygotic twins, and if it is dizygotic थोड़ा कम हो जाता है, which means if one shows it the other will show it too. इसको कहते हैं concordance. और रोजेंथॉल ने स्टडीज की मोनोजाइगोटिक, उन्होंने कहा with monozygotic schizophrenia 60%, अगर एक में है तो दूसरे में भी नजर आता है, ये कंकॉर्डेंस 60% है। और मेल्स में लेटर एज ऑफ ऑनसेट है और इसका फेवरेबल आउटकम भी है, फीमेल में नहीं। इनुई ने जापान में की, उसने कहा 3 ग्रुप्स ऑफ जाइकोटिक ट्विंस, और ख़ास तौर पे 23 जो बच्चे थे उनमें से 17 जो थे 74% कॉन्कॉर्डेंट थी, क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया। Mild transient schizophrenia, 9 out of those 23, 39% concordant. इसी तरह से एक हेस्टन ने स्टडीज की 1966 में, फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज, अडॉप्शन स्टडीज। उन्होंने ये बताया कि 50 बच्चे जो कि नॉर्मल मदर्स को पैदा हुए, 50 बच्चे जो शिज़ोफ्रेनिक माओं को पैदा हुए, इनको उन्होंने फॉलो अप किया ओवर अ लाइफ क्वाइट अ फ्यू इयर्स, एंड दे फाउंड आउट दैट 47 children of schizophrenic mothers had abnormalities, and most of them had serious psychopathology, whereas the normal 50 out of 50 normal mothers of children of normal mothers had no serious behavioral and other problems. Now नजर ये आता है कि अगर आप गौर से देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है शिज़ोफ्रेनिया की कि वो इनहेरिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को, इस बिहेवियर को जब पेरेंट्स में ये डिसऑर्डर हो तो जेनेटिक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो इस बात का अंदाज़ा कर लें कि हमारे बच्चों में ये डिफेक्ट पास ऑन तो नहीं होगा, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरह से शिज़ोफ्रेनिया के इफ़ेक्ट्स genetically are passed on to the offspring. Do read your handouts, do read your text, and if you can do your genetic mapping by looking at your family members, this will be an interesting exercise. Do this for yourself so you understand where your behavior comes from. Thank you.